आपने हिंदुस्तान की ग्रेटेस्ट फिल्म बनाई है आज तक. टुडे, स्टिल टुडे, इट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिल्म्स ऑफ ऑल टाइम. दैट शोले. ऑर्सन वेल्स ने अपनी पहली फिल्म बनाई थी Citizen Kane. He must have been about 25 or something. Somebody had summed up that that film was as much a feather in his cap as a stone in his neck. Do you feel Sholay, the kind of success that it got and the kind of love and adulation that it got, it kind of in some way tried to repeat, and did that affect you at any point in time? I don't think so. I always want to do something different. Yeah, yeah. So to me it was not कि मुझे ये फिर से ऐसी फिल्म बनानी है या बनानी पड़ेगी. जब वो फिल्म बन रही थी आपने शायद ये भी कहा था कि शोले जीपी सिप्पी साहब के बगैर नहीं बन सकती थी फिल्म. He is आपका one of the सपोर्टर. finest entrepreneurs ever Right. in any field. Now that you've said this, entrepreneurs and a businessman to some extent, जब फिल्म का बजट इनिशियली आया था तो मेरे ख्याल से उस वक्त 1 करोड़ रुपए के आसपास जो था, बट बनते बनते द फिल्म वेंट थ्राइस द बजट. इट वेंट अप टू ऑलमोस्ट 3 करोड़ एट दैट पॉइंट टाइम. उस वक्त डिड सिप्पी साहब और यू फॉर दैट मैटर फील एनी प्रेशर? I guess I didn't feel the pressure because he never applied any pressure. Yes. And did you feel the pressure because he didn't apply any pressure? कि भाई ये कुछ बोल ही नहीं रहे, मेरी पिक्चर ओवर बजट जा रही है, 1 करोड़ की जगह. You didn't feel it? No, I didn't feel it. I got so involved in the film that if it was taking time, I insisted on getting what I wanted. And I kept waiting, whether it was for a perfect light or a perfect shot, whether it was any factor or it was the heat where Hema Malini had to dance and बिचारी ने वो पाँव के नीचे प्लास्टर लगा के नाची, because नंगे पाँव नाचना था. So it was amazing how she went through it, because you put your foot on that stone in the heat, it's impossible to stand there, and she did it. She was brilliant. जीबीसीपी की एक और खास बात थी which obviously was a great help to you कि उनके पास जब शोले की स्क्रिप्ट आई थी, इनफैक्ट शोले वाज नॉट ऑफ कंप्लीट स्क्रिप्ट, और सामने एक फिल्म थी मजबूर जो बाकायदा फुल डिटेल्ड स्क्रिप्ट थी, बट ही चोज शोले एंड यू चोज शोले ओवर दैट स्क्रिप्ट. मेरी टेम्पटेशन अलग थी. मैंने कहा ये दोनों बनाते हैं. लेट्स मेक मजबूर बिकॉज इट्स रेडी टू मेक. इट्स स्क्रिप्टेड in a way that you can go straight into production. शोले तब तक शोले पे काम करते हैं. That was my feeling. His instinct was, my father said, don't waste time, do this. He saw that the potential in this was something else. So Sholay made a lot of careers.